So far, we have discussed that when we apply the rate of interest on any amount, we calculate its future value or present value. It is assumed that the rate of interest is given as a yearly or annual rate of interest, which is a very common practice. यानी rate of interest अमूमन annual ही होता है, अगरचे कि ये quarterly, monthly, semi-annual भी हो सकता है, but in most of the cases it is annual. जब हम ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया गया है, दैट इज़ व्हेन वी आर कंपाउंडिंग एन अमाउंट और वी आर डिस्काउंटिंग एन अमाउंट, वी एक्चुअली अप्लाई दैट रेट. और अगर एनुअल रेट एनुअली अप्लाई किया जाए, यानी उसको साल में एक दफ़ा अप्लाई किया जाए, सो दैट इज़ एनुअल कंपाउंडिंग और एनुअल डिस्काउंटिंग. लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि हम एनुअल रेट को साल से कम पीरियड के लिए अप्लाई करते हैं. दैट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज गिवन टू अस may be applied on quarterly basis or monthly basis, meaning that although in the agreement it is given as an annual rate, but its application is on monthly basis. Now, what happens when we apply the rate more frequently than 1 year? यानी अगर हम मंथली या क्वार्टरली या सेमी एनुअली या वीकली रेट को अप्लाई करें तो उससे क्या होता है? उससे हमारा इंटरेस्ट रेट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है. सो इन अदर वर्ड्स वी से दैट either we'll get a greater future value when we apply the rate and we compound it for a shorter period. So shorter period compounding is a topic of discussion because it changes our future values and our present values. And as I've just mentioned, that applying a rate of interest for a shorter period actually increases the effectiveness of the rate. Now, if the rate of interest remains the same, but it is applied for more than once in a year, it gives us a greater future value, or maybe a lesser present value, or greater present value. Let's see how it actually works. Future value increases because when we apply the rate more frequently, every time when the rate is applied, it is applied not only on the initial amount, but on the amount with some interest. यानी अगर हमने एक रेट जो एनुअल है उसे साल में एक दफ़ा अप्लाई किया तो हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर एक साल का इंटरेस्ट ऐड करके फ्यूचर वैल्यू निकाल ली. लेकिन अगर हम इसी रेट को साल में दो दफ़ा अप्लाई करेंगे तो पहले 6 महीने के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे और बाकी 6 महीने के लिए फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि 0 पॉइंट वाली प्रेजेंट वैल्यू का इंटरेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो उस वैल्यू का इंटरेस्ट होगा जो 6 मंथ्स के बाद हम कैलकुलेट कर चुके हैं. यानी ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द 1 year's whole interest. Now let us see how it works. Rupees 1000 are invested for 1 year, let's say, at a rate of 10% per annum, and let's see what will be the future value. हम इस एग्जाम्पल के अंदर ये देखते हैं कि अगर शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग ना की जाए तो हमारे पास क्या फ्यूचर वैल्यू आती है, और अगर शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग की जाए तो हमारे पास क्या फ्यूचर वैल्यू आती है. यानी इस डिस्कशन से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग करने से हमारी फ्यूचर वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ता है, और अगर पड़ता है तो क्या वो उस वैल्यू को बढ़ा देता है या कम कर देता है, और उसकी क्या वजह है कि हमारी फ्यूचर वैल्यू कम या ज़्यादा होती है. Now let's see, the first part of the problem is that we have to calculate the future value of 1000 rupees at 10% after 1 year. अगर हम एक साल के बाद वैल्यू निकालना चाहते हैं, so we use this future value interest factor formula, जिसके अंदर हम n की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 10% लेंगे, and the formula gives us a future value of 1100. In the second part of the formula, what we do is
that we apply the rate 6 monthly, यानी पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 6 months का on the amount which is 1000 and this is multiplied by 10%. 6 by 12 का मतलब है कि 6 months का इंटरेस्ट है out of total 12 months which is 50 rupees. Now, what will be the future value after 6 months? Because we have applied the rate and calculated the future value. So this 50 rupees amount will be added in 1000 and we'll get a future value of 1050 after the end of 6 months. The second part of the calculation for the remaining 6 months period will be calculating interest on 1050 and not on 1000. And this will give us a slightly higher amount of interest. And this will then be added in the value on which it was applied. And ultimately, at the end of year, we have got a future value of 1102.5. Now, if I compare this value with the one in which annual compounding was done, we see that this value is slightly higher. So what do we conclude? हम ये कहते हैं कि shorter period compounding की वजह से हमारी future value बढ़ गई है. Or in other words, we say that shorter period compounding has increased the effectiveness of the rate of interest. यानी जो rate of interest था वो वही रहा जो कि पहले हमारे पास था, यानी 10% जिससे हमारी वैल्यू 1100 आई थी. लेकिन उसी 10% रेट को जब हमने साल में 2 दफ़ा अप्लाई किया तो उससे हमारी फ्यूचर वैल्यू बढ़ गई, अगरचे थोड़ी सी थी क्योंकि अमाउंट हमारे पास छोटी हमने लिया. बट इफ इट इज़ अ बिगर अमाउंट एंड द कंपाउंडिंग इज डन फॉर मोर शॉर्टर पीरियड, वील हैव इवन अ ग्रेटर फ्यूचर वैल्यू. यानी हम इस बात को यूं कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग की जाएगी तो जो हमारा रेट है जिसको हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको अभी एडजस्ट नहीं किया गया किसी चीज़ के लिए, वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है. सो दैट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इट इज़ अप्लाइड फॉर शॉर्टर पीरियड, जैसे हमारी एग्जांपल में वो 2 दफ़ा अप्लाई किया गया क्योंकि हमने कहा कि हम बाई एनुअल या सेमी एनुअल कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास ज़्यादा फ्यूचर वैल्यू आ गई. इसी बात को अगर हम आगे लेके चलें, एंड इफ़ वी अप्लाई द सेम 10% रेट एंड वी डू द कंपाउंडिंग पर क्वार्टर, हम 4 दफ़ा इसको क्वार्टरली अप्लाई करें फॉर एवरी 3 months, तो हम देखेंगे कि हमारी फ्यूचर वैल्यू मज़ीद बढ़ जाएगी और 1102.5 से भी ऊपर चली जाएगी. This means that if we keep on shortening the compounding periods, our future value will keep on increasing. Or in other words, we may say that the effectiveness of rate of interest will keep on increasing with shorter and shorter period of compounding.